Hello everyone, welcome you all at India's largest online learning platform, Unacademy. Let's start with a brief introduction about myself. My name is Ravi Sir and I have 8 years of teaching experience in the field of GATE and Engineering Services Examination. I have qualified GATE 5 times and I have also qualified State Engineering Services Examination Uttar Pradesh and written test of some Mahadana PSUs like NTPC, SAIL, BHE, Coal India Limited and some other PSUs also. First of all, you all need to download Unacademy Learning app and get your subscription. After downloading this app, you have to get your subscription. And after getting subscription, you will get daily live classes, live test and quizzes, structured courses, unlimited access. Now, daily live classes ki jo benefit that you can chat with your educator, you can ask your doubt in the class itself, right? You can participate in the polls, etc. कहने का मतलब है there will be a full interactive class. Okay, then there is a live test. अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए देयर विल बी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आल्सो. अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, गेट या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज, आप लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, क्विजेज में पार्टिसिपेट करते हैं और गेट द रियल टाइम रियल एनवायरनमेंट फीलिंग. जो आपकी एग्जामिनेशन का रियल एनवायरनमेंट होता है उसकी फीलिंग लेने के लिए आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में पार्टिसिपेट लेते हैं. इवेल्युएट योर सेल्फ, और अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करते हैं. और देयर विल बी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. आप गेट दे रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हैं, दोनों में से कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, आपका जो अनअकैडमी पे कोर्सेज है, these courses are designed as per GATE and engineering services examination syllabus. Unlimited access. You will get live classes as well as recorded sessions. इसी वजह से अगर आपने live classes मिस कर दी है, राइट, या फिर नहीं मिस की है, आप उसको दोबारा से देखना चाहते हैं फॉर योर रिवीजन पर्पस, यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स at your comfort on your device on your time. You will get chance to learn with other top educators across India also. जो कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, ये अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग नंबर ऑफ कोर्सेज रन करते हैं थ्रू आउट द ईयर. Like there are 24 courses running for mechanical engineering, 18 courses for electrical engineering, like that. So throughout the year, all these courses are running. आप एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके. दो टाइप की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है आपके पास अनअकैडमी में. वन इज प्लस, अदर इज आइकॉनिक. Plus subscription, you will get India's best educator, interactive live classes, structured courses and PDFs, live test and quizzes. All these things you can live test and quizzes. All these things you will get when you are getting plus subscription. अगर आपने plus subscription लिया है तो ये सारे benefit आपको मिलेंगे. ये सारी benefit आपको iconic में मिलेंगे. Same thing that you get in plus, that you also get in iconic. बट आइकॉनिक सेक्शन में आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसका बेस्ट पार्ट ये है कि यू विल गेट अ पर्सनल कोच, राइट. ये पर्सनल कोच जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इनके साथ आप वन टू वन डिस्कशन कर सकते हैं. यू कैन हैव वन टू वन डिस्कशन विथ योर पर्सनल कोच अबाउट योर डाउट्स, अबाउट योर स्ट्रेटजी ऑफ द एग्जामिनेशन, अबाउट योर टाइम प्लानिंग, अबाउट योर सब्जेक्ट प्लानिंग. ऑल दीज थिंग्स यू कैन डिस्कस विथ योर पर्सनल कोच. कहने का मतलब है देयर विल बी अ फुल गाइडेंस, देयर विल बी अ फुल गाइडेंस. You will also get personalized test analysis, study planner, preparatory, study material. All those things you will get when you are getting iconic subscription. The fee for subscription for 24 months plus subscription के लिए आपको दोनों के लिए डिफरेंट फीस होगी. प्लस के लिए और आप आइकॉनिक के लिए. तो प्लस के लिए जो फी है दैट इज 44,000. बट अगर आपने ये कोड यूज किया रवि पीवाई, यू विल गेट 10% डिस्काउंट. दिस इज योर रेफरल कोड. That you have this referral code and you can get 10% discount. For 24 months you will have to pay 39,600. For 18 months you have to pay 34,650 rupees only. Okay, ये चीजें आपको for 12 months 6 months 3 months आपके पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं प्लस के लिए. लेकिन अगर आप 6 months या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो you will get no cost EMI also. No cost EMI is available for courses 6 or more months. The iconic subscription, the fee is for 12 months, this is 50,000. For 24 months, this is 74. If you use this referral code RaviPY, you will get 10% discount and ultimately you have to pay
45,225 for 12 months and 66,000 for 24. This batch is going to start from 20th December. You can join and take the. Now let us come to the today's session of fluid mechanics. Conceptual problems on fluid mechanics. We will be discussing fluid mechanics. Okay. हमने जो कोर्सेज कंप्लीट किए हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी बोथ. मैं सब पे आपको बेस्ट प्रॉब्लम कराऊंगा. फ्लूइड मैकेनिक्स कर लेंगे, इस बार फ्लूइड मशीनरी में भी करेंगे. देन विल स्टार्ट conceptual problems on thermodynamics and fluid mechanics both for gate and engineering sciences examination. So let's start. हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है फ्लूइड मैकेनिक्स. जो हमने कंप्लीट किया है that is we have already completed fluid mechanics. All the lectures are available here and fluid machinery also. These two we have already completed. The whole syllabus we have completed. Today we are going to discuss problems based on fluid mechanics. Conceptual problems based on fluid mechanics, जिससे आपका पूरा सब्जेक्ट भी रिवाइज होगा प्लस आपको जो भी सब्जेक्ट हमने पढ़ा है एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे उसका. Let's start with the first problem. I'll give you 1 minute to read this question and try yourself, and then we will start to solve. कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, फॉर्मूला बेस्ड, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हैं. कंसेप्चुअल. विल सॉल्व ऑल दिस. Okay, you just try to solve this. Okay. When the pressure of liquid increases from 3 meganewton per meter square to 6 meganewton per meter square, 3 megapascal to 6 megapascal, its volume decreases by 0.1%. The bulk modulus of elasticity of the liquid. What will be the bulk modulus of elasticity? Let's see. This is a simple question. You should answer this question quickly. What is bulk modulus? Bulk modulus is reverse of compressibility, and that is K equals to dP by dV by stress by volumetric. Strain is volume modulus. जो हम compressibility कहते थे बीटा, that is relative change in, ऐसे भी याद कर सकते हैं. What is beta? Relative change in volume dV by V per unit change in pressure. Right? इससे आपको याद कर सकते हैं. इसको आपको जो याद करने में आसानी होगी. What is compressibility? Relative change in volume per unit change in pressure as a response to change in pressure. आप कह सकते हैं कि आपको जो वॉल्यूम में रिलेटिव चेंज है dV by V इज रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम. अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया उसका वॉल्यूम चेंज कैसे होगा, उसका वॉल्यूम कैसे चेंज होगा. दिस इज योर कंप्रेसिबिलिटी. दिस इज योर कंप्रेसिबिलिटी. रटना नहीं है. अगर आपको डेफिनेशन पता है व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, आपका जब प्रेशर आप अप्लाई करते हैं किसी भी फ्लूइड में, आप प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी फ्लूइड में, तो वो फ्लूइड कितने से कंप्रेस हो जाएगा, कितना इजीली कंप्रेस हो जाएगा, दैट इज compressibility. Relative change in volume dV by V, right, divided by pressure. So that is compressibility, and K is 1 by. तो आप कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस होगा क्योंकि आपका प्रेशर चेंज, सॉरी वॉल्यूम चेंज इज नेगेटिव.
फाइनल वॉल्यूम इज लेस, इनिशियल वॉल्यूम इज dv को नेगेटिव क्यों लिखा हमने, बिकॉज जो फाइनल वॉल्यूम है दिस इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, दैट्स व्हाई dv इज नेगेटिव, k dv by dv सिंपल, यहाँ से k मिल गया माइनस v dp by व्हाट इज v, v गिवन नहीं है लेकिन हमें गिवन है dv by v, ऐसे dv by dp is given as minus pressure increases from 3 to 6, that is 6 minus 3, and relative change is 0.1%, and this is mega Newton, this is megapascal, this is in 10 to the power 3 into 10 to the power, और ये भी आपका 3 to the power मेगा, लेकिन हमारा जो आंसर है वो न्यूटन में है ना, आपका मेगा पास्कल में होगा, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मींस 3 into 10 to the power 9 न्यूटन पर 3 to the power 9 न्यूटन पर, दिस आंसर इज, आपका आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था, जो भी यूनिट थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, उसको कन्वर्ट कर लिया सिंपली मेगा पास्कल को आपने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। ये कंफ्यूजन बहुत होता है, सब्जेक्ट जब तक आप पढ़ते तब तक आसान है, एक बार आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया तो ये कंफ्यूजन बहुत होता है, कब आपका dv by vdp लिख जाता है, कब dp by vdp लिख जाता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं और सबके फार्मूले आपका मिक्स होना लाइक ये नेचुरल है, बहुत सारे फार्मूले आपके यहाँ पे मिक्स होना स्टार्ट हो, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको ये याद रखना व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम राइट एज रिस्पॉन्स टू प्रेशर चेंज, जो वॉल्यूम में चेंज हुआ एज रिस्पॉन्स टू प्रेशर चेंज, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इस टाइप से याद रखेंगे तो आपको फॉर्मूला इजीली याद रहेगा, तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Moving towards the next topic. We have 1 minute to solve this question. Plate of weight 150 meter and measuring 0.8 into 8 meter just slides down an inclined plane over an oil film of 1.2 mm thickness for an inclination of 30 degrees and velocity 0.2 meter per second. Then the viscosity of the oil used is. सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज विस्कस फोर्स हम कैसे लिखते हैं और उसको कैसे, I'll give you 1 minute to solve this question.
Let us draw. Here of course inclined plane. This is inclined plane. This angle is given as 30 degrees. आपसे कहा गया कि एक प्लेट है इसमें, एक प्लेट है और इसके बीच में एक आपने विस्कस लिक्विड फिल किया हुआ है here, और विस्कस लिक्विड इज प्लेट और इसके बीच में एक विस्कस ऑयल फिल है और ये जो थिकनेस है दिस थिकनेस इज 1.2 एम 1.2 एम जो आपकी ऑयल फिल की थिकनेस है दैट इज 1.2 एम और जो इसका वेट है, इसका जो वेट है डाउनवर्ड एक्ट करेगा फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज 150 is 150. Okay, now we have to find कि आपका यहाँ पे कितना होगा 150 न्यूटन and what will be the दो कंपोनेंट जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसमें, इसका दो कंपोनेंट होगा दैट इज 150 sin 30 और एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी 150 cos 30. ओके, इस ब्लॉक पे एक वेट एक्ट, एक फोर्स एक्ट कर रहा है. आपको एरिया गिवन है, एरिया इन कांटेक्ट विद ऑयल दैट इज गिवन एज 0.8 into 0.8. y गिवन है, y इज गिवन एज 1.2 mm या फिर 1.2 into 10⁻³ मीटर. नाउ मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज shear stress. व्हाट इज shear stress इज mu v by. अगर आपको कोई प्रोफाइल गिवन नहीं है यू विल कंसीडर लीनियर प्रोफाइल, राइट. या तो ऐसे तो आपका म्यू डी बाई डी वाई होता है, लेकिन अगर कोई प्रोफाइल गिवन नहीं है तो एक्चुअली आप लिखते हैं दैट इज म्यू डी यू बाई डी वाई. लेकिन अगर कोई प्रोफाइल गिवन नहीं है, नो वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन, तो आप न्यूमेरिकल के लिए याद रखेंगे नो वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन. जो हम यूज करेंगे दैट इज लीनियर प्रोफाइल u v by 5 and that is our linear. लीनियर प्रोफाइल होने का एक रीजन ये भी है कि आपका जो गैप है वो गैप बहुत ही कम है. लेकिन अगर इस कम गैप के बावजूद अगर आपको वेलोसिटी गिवन होती, वेलोसिटी का वेरिएशन गिवन होता, तो आपको वहाँ पे यूज करना. यहाँ पे गैप 1.2 mm है, बहुत ही कम गैप है ब्लॉक और प्लेन के बीच में, तो हम वहाँ पे लीनियर प्रोफाइल यूज कर सकते हैं. व्हाट इज shear stress? दैट इज F by A. F equals to mu A D by 2 where F is shear force. F is shear force. F is shear force. Tau equals to F by. तो अब म्यू आपको गिवन है इस प्रॉब्लम में. व्हाट इज F? जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज 150 sin 30 एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू. म्यू आपको फाइंड करना है एरिया 0.8 into 0.8 into velocity 0.2 and this is given as 1.2 into 10 to the power minus. This is 1.2. 1.2 into 10 to the minus. This is your velocity. 1.2 into 10 to the minus. Everything is correct, I guess. Y is given 1.2, velocity 0.2. Right. इसको हम सॉल्व कर लेंगे and we will get our answer. याद बस इस क्वेश्चन में आपको जो ध्यान देने की चीज है वो ये है कि वी हैव टू यूज लीनियर प्रोफाइल. अगर प्रोफाइल आपको गिवन होगी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी गिवन होगा एज फंक्शन ऑफ y, तब तो आप यूज करेंगे इस फार्मूला. अदरवाइज अगर या तो नहीं गिवन है तो या फिर बहुत ही कम गैप है तो आप लीनियर प्रोफाइल यूज तो सॉल्व कर लेंगे एंड विल गेट 75 into 0.70 and from here you will get mu equals to point this from here you will get 0.70. Mu is 0.70. From here you will get mu is 0.70.
70। ओके, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे एंड देन यू विल गेट u इक्वल टू 0.70। आंसर इज आंसर इज पॉइंट न्यूटन सेकंड पार्ट न्यूटन पार्ट। ओके, नेक्स्ट सिंपली आपको शेयर फोर्स पता चल गया, इस डायरेक्शन में फोर्स है, दैट इज शेयर फोर्स। दिस शेयर फोर्स इज जो कंपोनेंट है वेट का, जो वेट का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन, दैट इज 150 sin 30, दैट इज योर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन। वही आपका शेयर फोर्स है जो आपका प्लेन के पैरेलल लग रहा है, दैट इज योर शेयर फोर्स। शेयर फोर्स मिल गया, म्यू आपको पता करना है, एवरीथिंग एल्स इज दिस इज अ बेटर क्वेश्चन, दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये आप ट्राई करेंगे खुद से। I'll give you 1 minute to try this question. Okay, you try this question. Okay, I hope you understood this question. कि आपके पास एक वाटर ड्रॉप है, that is 1 mm diameter, it splits up into in air into 64 smaller drops of equal size. सबका सबकी रेडियस एक ही होगी, इक्वल साइज का है। सरफेस टेंशन कोफिशिएंट सिग्मा गिवन है 0.073 न्यूटन पर मीटर। द वर्क रिक्वायर्ड इन स्प्लिटिंग ऑफ द ड्रॉप इज, राइट। वर्क रिक्वायर्ड कैसे होता है, right? मैंने आपको बताया सरफेस टेंशन में, सरफेस टेंशन के टॉपिक हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है, अगर ये सरफेस जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे है, मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे है, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स, इन सब पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है वो नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है। अब अगर आपको इसकी सरफेस एरिया, दिस इज सरफेस, अब अगर इसको सरफेस एरिया आपको बढ़ानी है, तो अगर सरफेस एरिया बढ़ानी, इसका मतलब जो इनसाइड मॉलिक्यूल है इनको आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, राइट। टू इंक्रीज सरफेस एरिया, दैट मीन्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, राइट। ये जो मॉलिक्यूल ए है, ये सरफेस पे जाना पड़ेगा, राइट। मॉलिक्यूल इनसाइड लिक्विड, राइट, इनसाइड liquid has to move on the surface, has to move on the surface। इस लिक्विड को सरफेस पे जाना पड़ेगा। सरफेस पे जाने के लिए ये जो नेट फोर्स है, नेट डाउनवर्ड फोर्स है, नेट डाउनवर्ड फोर्स, जो सरफेस पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से आपका सरफेस टेंशन आई थी, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, राइट। और वही वर्क आपको पूछा। तो सरफेस क्रिएट करने के लिए वर्क क्यों करना पड़ता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था इन द टॉपिक ऑफ सरफेस टेंशन, दैट इज इन द फ्लूइड प्रॉपर्टीज का सेकंड टॉपिक, सेकंड लेक्चर होगा, आई गेस दैट यू कैन फाइंड।
इस सरफेस क्रिएट करने के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए आपको वर्क क्यों करना पड़ता है, वाई देर इज वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब आपके पास एक ड्रॉप था, नाउ वी हैड वन ड्रॉप, वी हैड वन ड्रॉप, ओके। हमारे पास एक ड्रॉप था और उसको हमने 64 इक्वल ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल मास कंजर्वेशन लगा देंगे, मास तो सेम होगा, मास कंजर्वेशन, and what is mass? Density into volume, density the same होगी क्योंकि लिक्विड यही है, density into volume, ओके, एयर हैंडल। तो आप सिंपली उसका वॉल्यूम इक्वेट कर लेंगे। वॉल्यूम कितना होगा पहले वाले का, 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी इज गिवन, दैट इज 1 ml, 0.5 पाई आर, 0.5 cube, and that will be equal to 4/3 pi r cube into 64. R is the radius of smaller droplet. R is radius of smaller droplet. अब 64 में कन्वर्ट हो गया स्मॉलर ड्रॉपलेट। इसको सॉल्व करेंगे और यहां से आपको R मिल जाए, राइट। यू सॉल्व दिस फॉर R, यू फाइंड R, 4/3 आप कैंसिल कर लेंगे, दैट इज 0.127, 0.127, 0.1277 या फिर 12127। दिस इज योर रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट, जो आपने ब्रेक करने के बाद रेडियस। तो इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी थी, इनिशियल सरफेस एनर्जी, इनिशियल सरफेस एनर्जी, इनिशियल सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन into surface area, at surface area. What is surface tension? 0.73 into surface area 4 pi r square, 4 pi r square, 0.5 square into minus, in the मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर लेंगे इसको, 0.5 स्क्वायर इंटू माइनस 6। ये हो गया आपका इनिशियल सरफेस एनर्जी। इसको सपोज हमने कह लिया E1, फाइनल surface energy E2, that is 0.073 into 64 into 4 pi r 0.127 square into minus, राइट। ये हो गया आपका। तो जो वर्क हो जाएगा, तो वर्क रिक्वायर्ड विल बी E2 माइनस जो वर्क किया गया है एनर्जी, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। फाइनल सरफेस एनर्जी है, जो इनिशियल सरफेस एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी आपको इसको दिया है, दैट इज E2 माइनस। यू कैन सिंपली सॉल्व ऑल दोस थिंग्स, right? You quickly solve this and tell me the, quickly solve this question and solve this thing and tell me the
and that will come as that as answer, that is 0.687 into 10 to power minus 6. Right, that's correct. 0.692 minus 6. This is our answer. एक ड्रॉपलेट था, वो ब्रेक होके आपका 64 स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया. दैट इज कन्वर्टेड इनटू 64 स्मॉलर ड्रॉपलेट्स. The surface tension coefficient of water is 0.73 meter per meter. Work required in splitting the splitting of the droplet is, कितनी एनर्जी पहले थी, कितनी एनर्जी बाद में थी, दोनों का डिफरेंस निकालने के, दैट विल बी द वर्क रिक्वायर्ड. कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, दैट इज द वर्क. जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, वही है आपका वर्क रिक्वायर्ड. क्रिएट सरफेस एरिया, जो आपका एक्स्ट्रा सरफेस एरिया आपको बनाने का. मास कंजर्वेशन मींस सिंपली व्हाट इज मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी दोनों का सेम होगा, दोनों एक ही चीज है. वॉल्यूम दोनों का अलग अलग आप सीधा कर लेंगे. दिस इज सिंपली मास कंजर्वेशन. वॉल्यूम दोनों का, टोटल वॉल्यूम दोनों का, नॉट 60, दिस इज 64. इट्स नॉट 60, दिस इज 64. टोटल 64 है. 64 smaller. Moving towards the next problem. Next problem. Vertical clean glass tube. Vertical clean glass tube of uniform bore is used as a piezometer to measure the pressure of liquid at a point. The liquid has a specific weight. Liquid has a specific weight of 150 kilonewton per meter cube. 150 kilonewton per meter cube, and the surface tension of 0.06 Newton per meter in contact with the air. If for the liquid the angle of contact with the glass is 0, the capacity and the capacity rise, not capacity rise, this is capillary rise. This is capillary rise. Capillary rise, this is capillary rise. Capillary rise in the tube is not to exceed 2 mm. What is the required minimum diameter of the tube? Simple question है. Formula अगर आपको याद है, this problem is simple. I'll give you one way to solve this question as well. Simple question. Options आपके पास है. Just solve this question. Everything else is given. Just have to find diameter. H given है, capillary rise given है. You just have to find diameter. Everything else is given. Okay. Let me try. H is 4 sigma cos theta by rho g. Rho g. H is given है less than or equal to 2 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम इसको 2 रख लेंगे. That is 4. Sigma is given as sigma is given as sigma should be given here somewhere. Point 0.06 Newton per meter. Sigma is 0.06 and cos theta. Theta is given as 0. Sigma is given as 0.06. Alright. Rho g is given as 15 into 10 to the power 3 Newton per meter. Specific weight आपको दिया है cos 0, and that is 15 10 to the power 3. What is that? इससे कम होना चाहिए.
राइट। जब h मैक्स होगा, व्हेन h इज मैक्स देन डायमीटर इज मिनिमम। तो डायमीटर आपका मिनिमम, मिनिमम डायमीटर के लिए हमने h को मैक्सिमम रख लिया, दैट इज 2। फॉर मिनिमम डायमीटर h शुड बी मैक्सिमम, इसको हमने रख लिया, यहाँ से हमें d मिल जाएगा। लेट्स फाइंड d। d is8 into 10 to minus 3 या फिर 8, that is 8, आंसर इज सिंपल। हमें कुछ नहीं, हमें अगर मिनिमम डायमीटर चाहिए तो कंडीशन ये है, अगर हमें मिनिमम डायमीटर चाहिए था तो कंडीशन ये है कि डायमीटर मिनिमम तब होगा जब कैपिलरी राइज मैक्सिमम होगा। कैपिलरी राइज कितना गिवन है, दिस h is given as less than or equal to 2, that means h max equals to, बस ये ध्यान रखना आपको, h max is equals to h max 2 ले लिया, बाकी सब कुछ आपको। नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी आपको shear stress फाइंड करना, shear stress you have to find shear stress in this। what is the Q is given as 2y minus y square। what is shear stress, mu du by, what is du by dy, सिंपल यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन है तब ये यूज करेंगे। फिर dy that is 2y minus y square, that is 2 minus 2y at y equals to 15 सेंटीमीटर या फिर 0.15 is du by dy is 2 minus 0.3, that is 1.7। okay, that shear stress is point, and what is mu, what is mu, mu is given as 8.6 poise, इसको आपको ध्यान देना, this is the poise, that will be 0.86 kg per meter second या फिर मीटर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, or Newton second per meter square, that should be converted first। now shear stress is simply mu du by, simply mu du by dy, what is mu, 0.86 with 1.7, 1.4, 1.46 Newton। 1.46 Newton। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन हो यू हैव टू यूज दिस। अगर वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन नहीं है या फिर बहुत ही कम है गैप, आपका प्लेट, दोनों प्लेट की जो प्लेट स्लाइड कर रहे हैं उन दोनों के प्लेट्स के बीच का गैप बहुत ही कम है, तो आप सिंपली म्यू डी यू आर डी, जो डी यू बाई डी वाई होता है, ये जो डी यू बाई डी वाई है
that is equals to u by y. ये तब होता है जब आपका गैप या तो बहुत कम है या फिर प्रोफाइल गिवन ना हो, तो सीधा टाइम इक्वल्स टू म्यू डी बाई एफ। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन थी तो पहले हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, वी फाइंड du by dy then du by म्यू du by। so the answer is 1.46 मीटर पर मीटर, 1.46 मीटर पर। Next one. The shear stress developed in a lubricating oil of viscosity 9.81 poise filled between two parallel plates 1 centimeter apart and moving with relative velocity 2 meter per second. Please. This question, just try this question. Viscosity is given, mu is 9.81 poise. We will convert this into 0.981 Newton second per meter square या फिर simply kg. This given two parameters 1 centimeter apart and moving with relative velocity 2 meter. Y is given as 1 cent and B is given as 2. Simple question है. Shear stress is mu d by what is mu 0.981 2 divided by 1 centimeter 1 is 10 minus that is 19.6, that is 1.96, that is 9 196 per centimeter. This is 0.981 1.962 into 10 to 100, that is 1. This is yours. Okay, this is our shear. सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए विल यूज द लीनियर प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल है, the velocity profile is not given, right? That means we will use linear profile, equation, that is tau equals to mu. ओके, अगर प्रोफाइल गिवन होती तो हम यूज करते म्यू डी बाई डी वाई, प्रोफाइल गिवन नहीं है, राइट, तो हम सिंपली we will simply use
नेक्स्ट प्रॉब्लम, we have to find position of force acting, that is center of pressure. We have to find center of pressure force from the free surface. फ्री वाटर सरफेस से आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, दैट ओके, यू सिंपली यूज दिस एंड आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं. सिंपली आप यू टेक 1 minute of time to solve this question, then I will solve. एक ट्रायंगुलर लैमिना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस इसका 1 मीटर है, हाइट 2 मीटर है, एंड लोकेटेड इन द वाटर इन द वर्टिकल प्लेन एंड इट्स वर्टेक्स इज 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना है. Isosceles triangular lamina है, बस 1 मीटर है, हाइट 2 मीटर है, is located in the water in the vertical plane and its vertex is 1 meter below the free surface of the water. The position of force acting on the lamina from the free water surface is, ये आपको फाइंड करना है. Where is the center of pressure? Location means कहाँ से force act करता है, that is you have to find center of pressure. You just have to find center of pressure. Okay. Let us try to draw the diagram. क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में. फ्री सरफेस आपका वाटर का, दिस इज फ्री सरफेस ऑफ वाटर. हमने जब डिस्कस किया था हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, उससे मैंने बताया था कि जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, वेदर इट इज एच बार जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस है, या फिर एच दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर, ये सब कुछ डिस्टेंस हम मेजर करते हैं फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ. ये एक ट्रायंगुलर लैमिना है जिसका बेस 1 मीटर है, बेस इज 1 मीटर and this is 2 meter and this is 2 meter, height is 2 meter और ये डिस्टेंस कहा गया है, दिस डिस्टेंस इज 1. दिस इज ट्रायंगुलर लाइन, ये आपका गिवन है, दिस इज फ्रॉम द वन, जिसकी जो वर्टेक्स है, इट्स वर्टेक्स इज 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. एवरीथिंग एल्स इज गिवन. You have to find what is the position of force acting on the lamina, that is center of pressure simply. Now what is center of pressure? Vertical है तो थीटा आपका 90 होगा, that is x bar plus ig by a. Now what is x bar? x bar हमारा जो g है, center of gravity lamina का, this is g. And what will be g? ये है 1, x bar is 1 plus, मैंने आपको बताया था कि चाहे आप x bar लें या फिर h लें, अब h bar this is h सेंटर ऑफ प्रेशर. सपोज कि हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा यहाँ पे, ये सारी हाइट आप लेते हैं फ्रॉम फ्री सरफेस. ऑल दीज हाइट्स आर मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस. x बार h ये दोनों ही मेजर्ड फ्रॉम फ्री सरफेस. हमेशा इनको फ्री सरफेस आपको मेजर करना है. फ्री सरफेस से x बार कितना डिस्टेंस पे है,
1 मीटर तो ये हो गया जहां से ट्रायंगल आपका स्टार्ट है, उसका वर्टेक्स 1 मीटर प्लस ये हाइट, तो चेंज द कलर, लेट मी शो यू, ये हाइट भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, और ये हाइट कितनी है, दैट इज 2h/3, दिस हाइट इज 2h/3, 1 प्लस 2h, नॉट h, चलो मैं इसका है 2/2, राइट, 2 × 2/3, 2h/3 जो आपका अगर टोटल हाइट जो होती है इसकी, अगर ट्रायंगल की हाइट है 2 मीटर, दैट इज 2 × 2, दैट इज 1 प्लस 4/3, दैट इज 7/3, राइट, 1 प्लस 4/3, दैट इज 7/, एस एक्स बार इज 7/3, ये आपको मिल गया. व्हाट इज आई जी, आई जी इज बी एच क्यू, तो एक्स नहीं लिखेंगे, कॉन्सेंट, कोई और डिस्टेंस जैसे एच ही लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, एच सेंटर ऑफ प्रेशर लिख देते हैं इसको, और इस 2 को हमने कह दिया एच, राइट, ये जो हाइट है आपकी, bh/36 base into height of triangle, that what is base 1, h³ that is 8/36, 8/36, and that is 2/9, I guess, 2/9. What is a, 1/2 base into height, 1/2, 1 into 2, that is 1, area is 1 मीटर, सब कुछ मिल गया आपको. व्हाट इज एच, सेंटर ऑफ प्रेशर, तो सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा, दैट इज एच सेंटर ऑफ प्रेशर, that is x bar plus ig by, what is x bar, 7/3 plus ig is 2/9 by area is 1, x bar is 7/3 plus this is 7, 2/21, I guess, ig is 2/9, area is 1, is 51/21, 51/21, I guess, this is 51 divided by 21, 51 divided by 21, that is 2.48, 2.428, that is 2.4, so this is 2.428, so this is our center of pressure. तो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा, ध्यान देने की सिर्फ चीज ये है कि जो भी आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है, दैट शुड बी, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस, जो एक्स बार है उस एक्स बार में आपको मेजर करने में गलत नहीं करेंगे, उसमें गलती नहीं करेंगे, एंड यू विल फाइंड एक्स बार फ्रॉम द फ्री सरफेस, राइट, ये जो नोटेशन है, दिस नोटेशन इज फॉर, so this is 2.48. Let us move further. A curved surface has the shape of one quadrant of 3 meter long, 2 meter diameter cylinder with two edges parallel to the axis. The curved surface is immersed in a stationary liquid of unit weight. Unit weight means उसका stationary weight 10 kilonewton per meter cube, such that one straight edge is on the liquid surface and other is 1 meter below the surface. Okay. The moment of vertical component of hydrostatic thrust, now this is not thrust, this is hydrostatic
This is not thrust, this is hydrostatic on the side of the surface about the axis of circular arc, about the axis of circular arc. Try to solve this. First try to uh, draw the diagram for this figure, for this question. क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? First try to draw and then let's just try to solve this. आपसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक स्ट्रेट एज जो है आपका वन स्ट्रेट एज इज वन स्ट्रेट एज is parallel to the surface, something like this. इसका straight edge है, something like that. One strategy is this here. Something like this. Something like this. This is given as 1 meter. इसका जो radius है, this length is given as 3 meter. एक straight edge उसका parallel है, दूसरा उसका 1 meter below है, 1 meter below the free surface. इसका vertical force component होगा, जो वर्टिकल फोर्स है सपोज यहाँ से जाएगा, इस वर्टिकल फोर्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका वेट है. व्हाट इज वर्टिकल फोर्स? वर्टिकल फोर्स इज सेंटर ऑफ, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 4r/3. 4r/3 जो भी वर्टिकल फोर्स है, और ये आपका इसको गिवन है, दिस इज 4. दिस पॉइंट इज गिवन अबाउट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर, एक्सिस ऑफ सर्कुलर, ये आपका सर्कुलर आर्क है, इसकी ये एक्सिस है पॉइंट ओ. तो पहले तो आपको वर्टिकल फोर्स फाइंड करना है और उसका मोमेंट फाइंड करना है ओके अबाउट, एंड दैट इज दिस डिस्टेंस इज, यू शुड नो दैट दिस इज 4r/3. दिस डिस्टेंस इज 4r/3. तो इसे हमें सॉल्व करना. हाउ विल सॉल्व? व्हाट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस? वर्टिकल कंपोनेंट of force. Vertical component of force is weight of liquid contained, weight of liquid contained up to free surface, weight of liquid contained up to free surface. That is FB is, FB is what is this? Pi r square, circle area 1/4 into length L, pi r square L, जो हो गया आपका वॉल्यूम, एंड दिस इज रो. वेट इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट रो जी एंड वॉल्यूम. वहां से हमने इसको लिख लिया, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया एंड वी फाउंड स्पेसिफिक वेट रो जी एट एफ बी इज पाई आर स्क्वायर एल इंटू टू. यहाँ से हमें एफ बी मिल जाएगा, वर्टिकल फोर्स एफ इज, everything is given here, 1/4 pi r square is 1 square, L is 3, rho g is given as 10 into 10 to the power 3, 10 kilonewton meter, 10 kilonewton per meter. This is given as 10 kilonewton per meter. This is given. Right?
Rho g is given as 10 kilonewton, 10 kilonewton per meter. Right, rho g is given as 10 kilonewton per meter cube. Okay, this is given 1 meter cube. Wow, sorry. Okay, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा हमें वर्टिकल फोर्स. लेट अस सॉल्व फॉर द वर्टिकल फोर्स. Next problem. Yeah, I hope you got this answer. The previous problem, I hope you got the answer is 10 kilonewton per. A circular area, next problem. A circular area of 1.2 meter diameter is vertically immersed vertically in a liquid of unit weight 800 Newton per meter, 800 Newton per meter, with its top edge just on the liquid surface, with its top edge just on the liquid surface. The depth of the center of pressure on one side measured below the liquid surface. यहाँ पे center of pressure यहाँ पे भी find करना है. Okay, we just have to find surface. मैंने आपको कुछ अगर टॉप एज तो मैं करके दिखाऊंगा आपको. ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है इन द प्रॉब्लम. ये आपसे प्रॉब्लम में कहा गया है आपसे प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक लिक्विड सरफेस है और एक सर्कुलर सरफेस यहाँ से जस्ट एट द एक सर्कुलर एरिया 1.2 diameter is immersed vertically in a liquid of unit weight 800 Newton per meter cube. The liquid has its density given है that is 800 Newton. Rho g given है 800 Newton per meter cube और इसका डायमीटर given है that is 1.2 मीटर. आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ प्रेशर. सिंपल सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा गया है. इस केस के लिए h इज दैट इज x बार. सेंटर ये आपका सपोज ही है और ये डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज आवर x बार. और यहाँ पे सपोज हम मान लें कहीं सेंटर ऑफ प्रेशर है. दिस सेंटर ऑफ प्रेशर इज x बार प्लस ig by ax bar, ig by ax bar. Okay, this is ig by ax. What is x bar? X bar is d by 2. What is ig? Pi by 64 d4 divided by area pi by 4 d square. And what is x bar? That is d by. तो जब सॉल्व करेंगे आप, दिस इज d by 2, pi by 4 cancel, that is 16 and this is 8 and d cube 8 बच जाएगा, ऊपर बचे d cube and this is d4 that is d by 8 and that is 5 d by
This is 5d by this is 5d by this is 5d by 8, and that is d आपको given है 5 into 1.22 by 8, that is point, and that is point. Okay. तो मैंने आपको ऐसे बताया था कुछ स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर है, दैट इज 2h by 3, दैट इज 5d by 8 by सर्कुलर. ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए ताकि आप डायरेक्टली यूज कर सकें. लेकिन कितनी चीज याद करेंगे उसकी एक लिमिट है, इसलिए अगर आपको याद नहीं भी है चीजें ये सारी, इसलिए सारी चीजें अगर आपको याद नहीं भी है तो आप डायरेक्टली इसको फाइंड कर सकते हैं. आप यहाँ से डायरेक्टली ये सारी चीजें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. 5d/8 अगर आपको याद है डायरेक्टली एक स्टेप में आपका आंसर आ जाता है. अगर नहीं याद है तो आप सिंपली ऐसे लिख लेंगे. एक्स बार होता क्या है, दिस इज वर्टिकल, दैट मीन्स थीटा इज 90, दिस इज वर्टिकल, दिस इज थीटा इज 90, साइन फॉर थीटा इज. अब इसको फाइंड करें. दिस इज योर 5d/8. दिस इज अदरवाइज अगर आपको याद था कि सर्कुलर प्लेट के लिए जो, लेकिन कंडीशन ये थी कि वो आपका जो वर्टिकल एज उसका एक एज है वो फ्री सरफेस के होना चाहिए. 5d/8 हमने डायरेक्टली फाइंड किया था. जी आपको स्टैंडर्ड से अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे ही कर सकते हैं. एंड आंसर इज 0.75. नेक्स्ट प्रॉब्लम. Okay. Once again, I will give you 1 minute to read this question and then try to solve. You have 2 minutes to read and solve this question. A rectangular plate area given is immersed in a liquid of relative density, efficiency of 0.85 with 0.75 side horizontal, and just at the water surface. The plane of plate makes an angle 60 degrees with the horizontal. What is the approximate pressure? What is the approximate pressure force on the one side of the plate? Hydrostatic force of the plate, right? That is, we have to find hydrostatic force. We have to find hydrostatic force on a flat plate. Flat plate है लेकिन inclined flat plate. Let us see what is. देखते हैं यहाँ पे क्या क्या given है, क्या क्या है. Let us see what is given and what we have to. ये है आपका फ्री सरफेस. दिस इज फ्री सरफेस. एक प्लेट है, इसकी ये वाली साइड है, दिस इज 2.4 मीटर, और इसकी जो 7.75 थी वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन इसके साथ थी. समवेयर हियर ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, एंड दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. ये था 0.75, ये इसके साथ आपका हॉरिजॉन्टल में था. वो साइड है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो मैं हटा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, एरिया तो मिल ही जाएगी. ये प्लेट कुछ ऐसे आपकी, दिस प्लेट इज समथिंग लाइक, दिस एंगल इज गिवन एज 60, दिस एंगल इज गिवन एज, आपसे कहा गया है, राइट,
0.75 तो आपका हॉरिजॉन्टल है, जस्ट एट द वाटर सरफेस है, प्लेन 60 डिग्री एंगल मेक करता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो आपको एफ जी होता है, दैट इज रो जी ए एक्स बार। तो हमारे पास रो जी है, रो है, जी है, ए है, एक्स बार हमें फाइंड करना है। व्हाट इज एक्स बार, व्हाट इज एक्स बार, व्हाट इज एक्स इज, तो ये जी है, ये जो हाइट है, दिस हाइट, दिस हाइट इज x, this height is x, okay? This height is x bar. What is x bar is 2.4 by 2. चलो अगर इस हाइट को मैंने कह दिया दिस हाइट इज, अगर इस हाइट को कह दिया मैंने दिस हाइट इज y, okay? This height is y, then what is y, find first y, what is y, y is 2.4 sin 60, I guess 2.4, 2.4 sin 60, yes, 2.4 cos 60, 2.4 cos 60 and 2.4 sin 60, 2.4 sin 60. And what is 2.4 sin 60? 2.4 sin 60, that is 2.08, 2.078 या फिर 2.08 मीटर लिख दिया हमने। What is x bar is y by 2, y by 2, this distance is y by 2 and this angle is 60, x bar is y by 2, simple. Total height of y, x bar is y by 2, that is 1.0. What is f? Rho, that is given as 0.85, that is 850, e 9.81, area 0.75 into 2.4 into 1.0, 1.0 into 1.0. That, that is 14,569 Newton या फिर 14.56 किलो, this is 14.56 या फिर okay, around 14.5, let me check 0.7. Okay, this is not 0.7, this is 0.75, right? This is 0.75. मैंने वहाँ पे 0.7 ले लिया था, दैट वाज 5, कुछ आंसर कम आ रहा था, 9.81 to 0.75 into 0.4, 15.609 या फिर 15.61, 15.609 किलो या फिर 15.61 किलो, 15.60, right? This is the 15.60 kilo Newton. This is the, okay? So this is our एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, मैंने आपको पहले बताया था एक्स बार आप डिस्टेंस लेंगे हमेशा फ्रॉम द वर्टिकल, दिस इज our, let us move to the next one. Circular plate of 1.5 meter, 1.5 meter diameter is
submerged in water is submerged in water with its greatest and least depth below the surface being 2 meter and 0.75 meter respectively. 2 meter and 0.75 meter respectively. What is the total pressure on one face of the, what is the total pressure on the one face of the, what is the total pressure on the one face of the total pressure that is, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ही फाइंड करना है. लेटेस्ट जस्ट मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं इसका डायग्राम ड्रॉ करने का. So what is the total circular plate of 1.5 meter diameter is submerged in the water. एक सर्कुलर प्लेट है, किसी वाटर में सबमर्ज किया है आपने, जो इसकी डेप्थ है, दिस डेप्थ इज 0.75, दिस डेप्थ इज 0.75 एंड 2 मीटर. और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 0.75 मीटर एंड 2 मीटर. ये है आपके पास एक सर्कल. तो सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर भी आपको गिवन है, डायमीटर गिवन है दैट इज 1.5, तो डायमीटर गिवन है 1.5. यहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, दिस इज पॉइंट. नाउ वी हैव टू फाइंड प्रेशर. फोर्स इज रो जी ए, रो जी ए एक्स. ओके, रो जी ए एक्स बार हमें फाइंड करना है. रो पता है, ए पता है, जी भी हमें पता हो जाएगा दैट इज 5/4 और डी स्क्वायर. व्हाट इज एक्स बार, व्हाट इज एक्स बार, एक्स बार हमें अगर पता करना है, लेट अस चेंज द कलर फर्स्ट एंड शो. अगर आपको एक्स बार चाहिए तो ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस प्लस दिस, ये दोनों डिस्टेंस आपको ऐड करनी पड़ेगी. व्हाट इज एक्स बार, दैट इज 0.75 प्लस ये एंगल है आपका थीटा अगर हमने मान लिया, देन व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, एंड दैट इज 1.5 बाय दिस डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 2 minus 0.75 divided by 1 point. This is sin theta. 2 minus 0.75. 2 minus 0.75 and that is 1.25 divided by, that is 56.44. Theta is 56.44. Okay. Now this, and what is this distance, x bar plus this is 1.5 half the distance. This 1.5 by 2, ये डिस्टेंस आपका यहाँ से आता है, ये डिस्टेंस 1.5 by 2, दिस इज 1.5 by 2. ओके, इनटू साइन.
यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 1.375, x इक्वल्स टू 1.37, x इक्वल्स टू 1.37. दिस इज आवर x, सॉरी दिस इज x. अगर आपको x बार मिल गया, then what is horizontal force? This force is hydrostatic force rho, density given है. In water, that is submerged water, that is 1000, 9.81, area pi by 4, t square, that is 1.5 meter square into 1.36. Twenty-three point eight three six. Right. 23.836 something या फिर 836 किलो न्यूटन, या फिर कह लिया हमने F इज इक्वल 24, ऑलमोस्ट F इज इक्वल, आंसर इज F is 24 kilo. Answer is, you can find like I hope you got this. कुछ नहीं करना आपको, x बार आपको ये जो मेजर करना है, दिस इज टोटल x बार. जो x बार है वो ये है आपका टोटल x बार. दिस डिस्टेंस इज, ये है आपका टोटल x बार फ्रॉम द फ्री सर्फेस. तो हमने 0.75 ऐड कर लिया, दिस डिस्टेंस इज 0.75, दिस इज 0.75, and this distance is 0.75, and this distance is 1.5, 1.5 by 2 sin theta. Sin theta हमने यहाँ से फाइंड कर लिया था पहले ही. Okay, let's move to the next. Okay. Let's move to the next one. A stone weighs 400 in air. When immersed in water, it weighs 225 liters. If the specific weight of the water is 1890, the relative density of the stone, आपको stone की relative density होता है. And what will be the relative density of the
जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब भी हम किसी बॉडी का वेट एयर में करते हैं, दैट वेट इज ट्रू वेट, वो आपका ट्रू वेट होता है। ओके। और जो एक दो चीजें हमें पड़ी थी, दो चीजें हमने इस क्वेश्चन में जो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है वो ये है दैट वेट इन एयर दैट इज आवर ट्रू वेट, राइट, क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, जो बॉयल्सी फोर्स होगा बहुत ही मिनिमम होगा। और दूसरा, ये आपको याद रखना है, वेट लॉस इज इक्वल टू बॉयल्सी फोर्स, वेट लॉस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ, ये दो चीजें ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, दैट इज इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एक पीएससीज में, हर एक पीएससीज में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समथिंग लाइक let us try to solve this question. Let us try to solve this question. आपको जो गिवन है वेट इन एयर, एयर that is true weight, true weight of the body, यानी weight of the body is given as weight, WB is weight of the body, and that is given as 400 newton, like 400 newton, and this is weight of the body is equal to density of the body T and volume of the body. Okay? That you can, this is given as 400. Second, आपको जो weight loss है, weight loss is given as weight loss is given as force of 1 second. What is weight loss? 400 minus 225. 225 आपका जो weight है that is in water में जो weight है that is 225. True weight water जो आपका weight है, इसका मतलब इतना weight loss आपको मिला, इतना ही आपको buoyancy force लग रहा होगा. What is buoyancy force? Density of water G, volume of fluid displaced. वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, क्योंकि ये सबमर्ज्ड बॉडी है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। अगर बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, अगर बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो वो बॉडी सपोज ऐसे है, ये कोई बॉडी एंड दिस बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ये जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, तो यहां से आपको मिल जाएगा दैट इज 175, right, that is 1000 into G into volume of the body. From here you will get volume of the body, यहाँ से volume of the body मिल जाएगा, that will be 175 divided by 9, point 0.0178. This is the volume of the body, 0.0178 मीटर। तो आपको ये इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की और इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 weight of the body is given as 400, WB is equals to rho B, that is 400 equals to density of the body, आपको फाइंड करनी है, to 9.81 into volume 0.017, 0.017 है, ऐसे आपको डेंसिटी ऑफ द बॉडी मिल जाएगी, दैट विल बी 400 2290, दिस इज 2290, जो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी हेयर, दैट विल बी 2.2,
reactive density will be 2.9 या फिर 2.29 या फिर 2 reactive density will be 2.29 या फिर simply reactive density will be 2.29 और simply this. कुछ नहीं करना, बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के लिए कि वेट ऑफ द वेट इन द एयर, जब एयर में वेट मेजर करते हैं तो वो आपका उस बॉडी का ट्रू वेट, और जो वेट लॉस होता है किसी लिक्विड में, वेट लॉस इन अ फ्लूइड, वो होता है जितना वो फ्लूइड उस पर फोर्स ऑफ बुयांसी अप्लाई कर रहा है, राइट। ये भी हमने डिस्कस किया था अपने सब्जेक्ट में जब भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। तो पहले हमने वेट ऑफ द बॉडी, व्हाट इज वेट, सिंपल हमने यूज किया वेट इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट into volume. Specific weight into volume. Rho g into weight of the volume of the body. Simple. What is the question? You just take 1 minute to read this question and try to solve. Okay. What is given here is a spherical balloon of 1.5 meter diameter is completely immersed in water and chained to the bottom. If the chain has a tension of 10 kilonewton, the weight of the balloon will be nearly. Weight of the balloon will be, ये आपको सिंपली बलून का वेट बताना है, बलून का डायमीटर गिवन है, टेंशन गिवन है जो भी स्ट्रिंग है उसमें, एक स्फेरिकल बलून है कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर। ये है सपोज आपको वाटर सरफेस, एक बलून है दैट इज सबमर्ज्ड इन, और एक चेन है ग्राउंड से, यहाँ से आपने इसको चेन कर रखा है, एक चेन कर रखा आपने इस बलून को, इस बलून का डायमीटर गिवन है और इस बलून में इस जो भी आपका चेन है, इस चेन की टेंशन गिवन है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे सिंपली, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द बलून, फ्री बॉडी डायग्राम पे ये बलून है, इसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर, एक तो इसमें जो टेंशन है, दिस टेंशन, दिस टेंशन डाउनवर्ड्स, इसमें टेंशन होगी दैट इज डाउनवर्ड्स, इसका इसमें बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी अपवर्ड्स, सबका रहेगा कैसे है कि होगा बॉयंसी फोर्स, और एक यहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड्स, वेट ऑफ द बलून। तो जो वेट होगा W, वेट ऑफ द बलून बार W प्लस टेंशन एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू, इसकी वजह से ये बलून आपका वहाँ पे चेन के साथ बंधा रहेगा, चेन के साथ ये स्टेशनरी, वेट हमें चाहिए दैट इज एफ बी माइनस टेंशन,
टेंशन तो गिवन है 10 किलोमीटर, फोर्स ऑफ buoyancy हमें अगर मिल गई तो हमें अपने टेंशन मिल गया। तो व्हाट इज फोर्स ऑफ buoyancy? F is rho e weight of the fluid displaced, that means volume of balloon, that is 1009.81. What is volume? Volume of balloon, that is W e weight of the volume of the balloon, that is 4 by 3 pi r cube. Diameter is given as 1.5, that is 0.75, 4 by 3 pi. That will come as, let's find, 17.3. This is 17.33 kilonewton. What is weight? Weight from here is 17.33 minus 10, and that is 7.33 kilo. 7.33 kilo. This is the weight, 7.33. 7.33. 7.33. With 14 question next. Okay, after once again we will read this question and solve it. Try to solve. With its axis vertical, with its axis vertical and 10 centimeter projecting above the water surface. A 25 centimeter long prismatic homogeneous solid floats in the water with its axis vertical and 10 centimeter projecting above the water surface. Okay. Total length 25 centimeter, 10 centimeter water के above है. If the same solid floats in the some oil with its axis vertical and 5 centimeter projecting above the, then specific gravity of the oil. जो ऑयल है उस ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, दैट हैज बीन. सिंपल क्वेश्चन है. यू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. यू जस्ट ड्रॉ द. पहली बार आपसे कहा गया है कि जो फर्स्ट लिक्विड है उसमें 10 सेंटीमीटर बाहर है. दिस इज सपोज हमें प्रिज्मेटिक बार ले लिया तो दिस इज 10 सेंटीमीटर. ये जो बच जाएगा इनसाइड द वाटर दैट विल बी 15 सेंटीमीटर, एंड दैट इनसाइड द जो दूसरा ऑयल उसके अंदर सेम
this is 5, ये 5 सेंटीमीटर है, this will be 20. टोटल हाइट आपको गिवन है, और दोनों बॉडी एक ही है, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें मिले, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A in both cases. Cross section area is A in both cases, and this is in the. यहाँ पे क्या होगा, weight of the body is equals to weight of the fluid displaced, या फिर simply buoyancy force in water. यहाँ पे weight of the body and that should be weight of the fluid displaced, that is buoyancy force of buoyancy in oil, बॉडी एक ही है तो उसका वेट तो एक ही होगा, जाहिर सी बात, दोनों जगह पे दोनों कंडीशन वेट इसका एक ही होगा. हम तो इक्वेट कर सकते हैं force of buoyancy in water, and that should be equals to force of buoyancy in oil. Right? Force of buoyancy in water, that should be equal to force of buoyancy in oil. What is force of buoyancy in water? That is rho W G, weight of the fluid displaced. तो सपोज इसको हमने कह लिया वी डब्ल्यू ले लेते हैं, चलो इसको हमने कह लिया सबमर्ज्ड वॉल्यूम. दिस सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज वी डब्ल्यू, और ये जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है इसको सपोज हमने कह लिया दिस इज वी डब्ल्यू एंड दिस इज रो एल जी पी ओ. व्हाट इज वी डब्ल्यू? जी तो कैंसिल हो गया, रो डब्ल्यू. व्हाट इज वी डब्ल्यू? एरिया इनटू लेंथ, दैट इज 15, and that is rho of the oil. G cancel हो गया. What is V? So volume submerged cross section area into length, and that is area cancel. That will be 15 by 20, and that will be 0.7. That will be point. Answer is point. कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन ये आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि buoyancy force होता है. व्हाट इज वेट ऑफ द बॉडी? सिंपल प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन. वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, एंड दैट इज वही जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, दैट इज फोर्स ऑफ buoyancy. तो दोनों केस में जो फोर्स ऑफ buoyancy है वो उस बॉडी के वेट के बराबर होगी. राइट? केस चाहे तो हो, जो आपका बॉडी का वेट है वो तो चेंज नहीं होगा, बॉडी का वेट उतना ही होगा, सिर्फ उस बॉडी का जो डेप्थ ऑफ इमर्शन है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द ऑयल. जो भी फ्लूइड है, जिस फ्लूइड में उस बॉडी को आप सबमर्ज कर रहे हैं, उस फ्लूइड की डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपका जो बॉडी है, और जो उस फ्लूइड की डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो आपकी बॉडी है, उस बॉडी का डेप्थ ऑफ इमर्शन चेंज हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं. ओनली द डेप्थ ऑफ इमर्शन विल चेंज. अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी. बॉडी का वेट दोनों केस में सेम होगा, दोनों का फोर्स ऑफ बुoyancy आप सेम कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, एंड यू विल सिंपली सॉल्व. व्हाट इज वॉल्यूम? दिस वॉल्यूम इज, ये जो वॉल्यूम दिखा रखा आपने सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लेते हैं. वेट ऑफ द वी डब्ल्यू एंड ये जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम, दिस सबमर्ज्ड weight of the fluid displaced. What is force of buoyancy? Force of buoyancy is rho g and weight of the fluid displaced. Rho weight of the fluid and the FD is volume of the fluid. जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है, दैट इज एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ. 15 है. From here you will solve and you will find the. Okay. From here you will solve and find the answer. इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एक पीएसयू में आपको इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, इंक्लूडिंग गेट. आपके गेट में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं. एट यू शुड रिमेंबर ऑल दोस फॉर्मूला, ऑल दोस थिंग्स, एंड यू कैन सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन. पीएसयू में तो ऐसे क्वेश्चन हर एक पीएसयू में मिलने ही हैं आपको.
Next one. Piece of metal of specific gravity 7 floats in the mercury of specific gravity 13.6. What fraction, this should be fraction, what fraction of its volume is under the, what fraction of the volume, what fraction of its volume is under, कितना मरकरी के अंदर होगा ये आपको let's find out. Let's try to find out. कोई बॉडी है, बॉडी आपकी सबमर्ज्ड है, ये है आपका मरकरी, दिस इज मरकरी, और हमने मान लिया कि ये जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है दिस इज WM, और जो टोटल वॉल्यूम है बॉडी का दिस इज V, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी VB, एंड ये जो सबमर्ज्ड पार्ट है दिस इज VM, मरकरी में जो सबमर्ज्ड है दिस इज V, बॉडी की स्पेसिफिक मेटल की स्पेसिफिक इज 37, मरकरी दैट इज 13.6. अब हम सिंपल प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई करेंगे, सिंपल और कुछ नहीं, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वेट डिस्प्लेस्ड, दैट इज फोर्स ऑफ buoyancy. What is weight of the body? So body volume of the body, and that should be equals to weight of the fluid displaced, weight of the mercury, जो आपकी fluid है, fluid is mercury है, यहाँ पे जो fill किया हुआ है that is mercury, weight of the mercury G, volume inside the mercury, weight of the fluid displaced, weight of volume of the fluid displaced is volume inside, the volume inside the mercury है वही है volume of the fluid displaced. सिंपली आप यहाँ से G कैंसिल कर लेंगे, हमें जो फाइंड करना है that is VB by VM by VB. What fraction? VM by VB, that is rho B by rho M. Specific given है तो density term लिखते हैं, that is 7 by 13.7 by 13.6, 0.514, 0.51, 0.51, 0.514, that is 0.51. This is how सिंपल है. प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन यूज करेंगे, वेट ऑफ द बॉडी को वेट ऑफ द प्लेट डिस्प्लेस्ड यूज करेंगे आप, and you will find the answer. Let's move to the next.
ओके, आई होप कि अपने क्वेश्चन वेट कर लिया। वन एक ओपन सिलेंडर है, 1.2 मीटर हाइट है उसकी, इज फिल्ड विथ लिक्विड टू इट्स टॉप, बिल्कुल टॉप तक लिक्विड हमने फिल कर दिया। Liquid is given a rigid body rotation, उसको rotate किया about its axis, and the pressure at the center line, this is the important here, pressure at the center line at the bottom surface is found to be 0.6 meter of the liquid. What is the ratio of the volume of liquid spilled out of the cylinder to the original volume? क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन है। एक इनिशियली आपके पास एक टैंक था, कंटेनर कह लीजिए, ओपन सर्कुलर सिलेंडर, और ये टॉप तक बिल्कुल आपने वाटर से फिल किया। दिस इज फिल्ड अप टू इट्स टॉप। ये है इसकी एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट आपने रोटेट किया तो जाहिर सी बात है आपका वर्टेक्स मोशन है, इसके अबाउट आपने रोटेट किया तो जो दिस इज इनिशियल कंडीशन। अभी फाइनल कंडीशन में क्या होगा, कुछ वाटर इसमें से स्पिल्ड आउट हो जाएगा, कुछ वाटर अपने सिलेंडर से बाहर चला जाएगा, और जो वाटर बच गया, सपोज कि हमने मान लिया तो वाटर थी। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो हाइट है, दिस हाइट इज 0.6 मीटर। कैसे कैसे, यही आपको गिवन है। यहाँ पे जो प्रेशर है, सेंट्रल एंड द बॉटम, प्रेशर गिवन है 0.6 मीटर ऑफ द लिक्विड, जो भी लिक्विड उसके अंदर था उसका 0.6 मीटर। दैट मीन्स ये सिंपली आपको गिवन है दैट दिस हाइट इज 0.6 मीटर, दिस हाइट इज 0.6 मीटर, यह 0.6 मीटर है, तो ये हाइट भी आपकी 0.6 मीटर हो जाएगी, क्योंकि टोटल हाइट जो थी वो 1.2 मीटर, 1.2। तो वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड volume of paraboloid is 1 by 2 pi r square, and that is 1 by 2 pi r। इसका रेडियस कितना है, राइट, रेडियस इज radius has given, but that will be cancelled out, that's okay, pi r square 0.6, and volume of cylinder, what is volume of, this is volume of paraboloid या फिर वॉल्यूम स्पिल। जो वॉल्यूम स्पिल है, वॉल्यूम स्पिल्ड आउट, जो वॉल्यूम स्पिल्ड आउट हो गया, तो वॉल्यूम स्पिल्ड आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड। जो पैराबोलाइड का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम आपका स्पिल्ड हुआ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड, दैट इज Vs, एंड दैट इज इक्वल टू 1 पॉइंट, लेट्स को Vs कर लिया, वॉल्यूम स्पिल्ड आउट जो पहले Vs पाई r स्क्वायर पॉइंट 0.6, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर टोटल है, पाई आर स्क्वायर 1 पॉइंट, ओके। तो कितना रेशियो आपका क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्पिल्ड आउट, जो रेशियो है, रेशियो जो स्पिल्ड आउट है वी एस बाई वी एस बाई वी सिलेंडर जब से पूछा गया है, दैट इज 1 by 2 pi r square 0.6 and divide by pi r square 1 point, pi r square 1 point, this is pi r square 1 point, okay, pi r square 1 point, तो कैंसिल कर लेंगे, this is 1 by 4, this will be 1 by 4, pi r square cancel, this is 1 by 2, this is 1 by 2 already there, so this is 1 by 4, answer is 1, answer, okay। जितना ये वॉल्यूम, इसमें आपको डायरेक्टली हाइट h ना गिवन होकर गिवन था कि जो सेंटर लाइन पे ये जो प्रेशर हेड है, दिस प्रेशर हेड वाज गिवन, प्रेशर हेड, एंड दैट वाज गिवन 6 मीटर ऑफ लिक्विड, 0.6 मीटर ऑफ लिक्विड, दैट मीन्स कि ये जो हाइट है दिस इज 0.6 मीटर ऑफ दैट लिक्विड, आपको 0.6 मीटर ऑफ लिक्विड, 0.6 मीटर ऑफ,
तो यहाँ से सिंपली आपको अपना आंसर मिल जाएगा एंड दैट विल बी। जितना वॉल्यूम पैराबोलॉइड है ना उतना ही वॉल्यूम आपका बाहर जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फाइंड कर लिया आपने। ये जो है टोटल की इट इज 1.2 मीटर, ये हाइट गिवन थी पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आपने इसको सिंपली फाइंड। आई होप यू गॉट योर। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टेक 1 minute to read and then solve it. Let us see. आपसे कहा कि एक वुडन रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी लेंथ है, वाटर में फ्लोट करता है, उसकी एक्सिस वर्टिकल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 0.15 एल। जो टोटल लेंथ है उसका 0.15 एबव द बॉयंसी। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वुडन? आपको उस ब्लॉक की स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वुडन, दैट यू हैव। लेट अस ये है आपका बॉडी। इस बॉडी की फ्री सरफेस, इस बॉडी की टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ इज व्हाट इज, सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कहा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रेक्टेंगुलर ब्लॉक का ऐसे कुछ होगा, दैट विल बी समथिंग, ओके, दैट विल समथिंग लाइक दिस। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी गिवन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पूरे बॉडी को होगा यहाँ पे एल पे, दिस इज एल बाई, दिस इज पॉइंट, और इसी में एक होगा आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी जो सबमर्ज्ड पार्ट है उसके अप, और ये जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज 0.15, दिस इज 0.15, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 0.15 टोटल लेंथ का, और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 0.5 एल।
यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज 0.5 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.15 है। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी 0.35 L, राइट। दिस डिस्टेंस विल बी 0.35 L जो B है। तो जो टोटल सबमर्ज लेंथ है ये, दिस टोटल लेंथ विल बी 0.7L, क्योंकि जो सेंटर ऑफ बुआयंसी है, जो सेंटर ऑफ बुआयंसी है वो होती है एट द, सेंटर ऑफ बुआयंसी इज एट द हाफ ऑफ द सबमर्ज वॉल्यूम। अगर नीचे से 0.3 है 35 है, तो ऊपर से भी 0.35 ही होगी, दैट इज 0.7। अब सिंपली अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई कर देंगे, आपको कुछ नहीं बचा है। आपको समझ में आया कि ये जो टोटल लेंथ है, जहां पे जी है, जहां पे जो जी है दैट इज 0.5 L, पूरे बॉडी के हाफ 0.5 L, ओके। और उससे 0.515 नीचे है आपका बी, तो जो 0.5 जो बी होगा ये डिस्टेंस हो जाएगी, इस डिस्टेंस के लिए 0.35 है। तो ये हाफ है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम हो गए, सेंटर ऑफ बॉयंसी के लिए 0.35 दैट इज, तो क्योंकि अगर ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ब्लॉक है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी जो सबमर्ज्ड पार्ट है उसके हाफ हो, राइट, दैट इज टोटल 0.7। सिंपल प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई कर देंगे, and that is weight of the body is equal to weight of fluid displaced. What is weight of the volume? Weight of the, sorry, density of the body. The volume of the body is area into length. This is volume of the body, right? That is area into length. That is area into length. What is volume of fluid distance? Rho of density, that is what is rho fluid distance? Rho of water. Water is, I guess this is in the problem. This is given as water. Fluid distance, G, volume of fluid distance. What is volume of fluid distance? Area into 0.7 L. Okay. हमें चाहिए क्या? Find the specific gravity of the wooden block. Specific gravity of the wooden block. Specific gravity of the wooden. ये हमें specific gravity मिल जाएगी यहाँ से. G and A cancel out. L is cancel out. That is point. This is point. तो दोनों को जो density है that is simply point. Specific gravity is point. Answer is point. Okay, from here you will get your answer, and that is point. Okay, you got it. Rate of displacement कितना है? जो submerged, ये submerged length है, this is submerged length. This is your submerged. ये submerged length है, that is 0.7 है. तो जो submerged और जो area क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम होगा. This is submerged volume और volume of fluid displaced. Weight of fluid displaced is weight of the body and weight of the fluid. What is weight of the fluid displaced? Rho F, rho G, specific weight into area into volume of fluid displaced. ये है, ये this is volume of fluid displaced. This is volume of the fluid. This is volume of fluid. In a different manometer head, in a different manometer, okay, next problem, in a different manometer head of 0.6 meter, head of 0.6 meter of fluid A in the limb is found to be, okay, in a different manometer
Manometric head is 0.6 meter of fluid A in limb 1 found to balance 0.3 meter of fluid B in the limb 2. The ratio of specific gravity uh, of A and simple question. एक मैनोमीटर है तो कहा गया है कि इसका लेवल है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का इससे और ये जो बैलेंस कर रहा है जो मैनोमीटर है इस मैनोमीटर इज बैलेंसिंग एक साइड में और जो दूसरी साइड में दो अलग अलग लिक्विड है दिस इज ए दिस इज पी एंड दिस इज 0.6 and this is 0.6 and 0.3 limb 1 and limb 2. Now what is asked in this question? आपसे पूछा ये गया है कि the ratio of specific gravity. तो हम सिंपल अगर ये बैलेंस है तो सिंपली पी ए शुड बी इक्वल्स टू सिंपली पी ए शुड बी इक्वल्स टू पी बी और कुछ नहीं करना पी ए पी बी को आपको यहाँ पे इक्वेट कर देना अगर आपने पी ए इक्वल्स टू पी बी कर दिया तो जो आपको मिलेगा दैट विल बी रो ए ई एच ए दैट इज रो बी ई एच बी रो ए बाई रो बी दैट इक्वल्स टू एच बी बाई that is 0.3 and that is सिंपल कुछ नहीं एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर दोनों जगह पे सेम होना चाहिए वही कंसेप्ट हमने यूज कर लिया दैट इज प्रेशर पी ए इक्वल्स टू प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम में है at equilibrium pressure at A should be equals to pressure at that is next problem. What is the next problem? Okay, you just read this question and then solve. Try to solve. Okay, then I will give you the answer. What is the absolute pressure at A? इस पॉइंट पे आपको absolute pressure है absolute pressure at here you have to by an open tube manometer as in the figure above, as in the figure. Assume atmospheric pressure as 103 kilonewton. Assume atmospheric pressure as 103 kilonewton. As A and as B are specific gravities are two fluids. यहाँ पे फ्लूइड होगा और एक फ्लूइड आपका
SA एंड SB दोनों फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। अब से पूछा गया कि पॉइंट ए पे कितना होगा absolute pressure at A measured by an open tube manometer as well। कैसे सॉल्व करेंगे? इस मैंने आपको बताया था मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे हम सिंपल। मैनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सिंपल आप इस पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे या फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड हियर यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें एब्सोल्यूट प्रेशर लेना है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो नहीं कर सकते। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, मूविंग डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, मूविंग अपवर्ड इज नेगेटिव फ्रॉम हियर एंड देन विल कम टू एट दिस पॉइंट राइट इन लिक्विड बी। उसके बाद हम इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर जंप कर जाएंगे, प्रेशर विल बी सेम लिक्विड, एक हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर सेम होगा। उसके बाद यहाँ से हम जंप कर जाएंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लिक्विड एक ही है एट दिस सेक्शन SA, जो SA लिक्विड है यहाँ से यहाँ तक सेम, इन दोनों पॉइंट्स में जो लिक्विड है ऊपर का दैट इज सेम। उसके बाद दिस इज 1.25 सेंटीमीटर डाउनवर्ड इन SA, वी विल रीच टू द। तो हम सिंपल मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। लेट अस राइट द मैनोमेट्रिक इक्वेशन। मैनोमेट्रिक जो हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे वहां पे ऐसे होगा, प्रेशर एट ए, एब्सोल्यूट प्रेशर लेना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम जीरो नहीं कर सकते, प्लस इस लिक्विड में 50 सेंटीमीटर डाउनवर्ड टू ई ई दैट इज 50 सेंटीमीटर या फिर 0.5 प्लस यहाँ से यहाँ जंप करके यहाँ से यहाँ तक जंप करके सबको यहाँ से यहाँ तक जंप करके प्रेशर सेम होगा क्योंकि सेम लिक्विड था डाउनवर्ड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे जंप करके क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे लिक्विड सेम है तो हमने यहाँ पे जंप कर गए। उसके बाद आपकी जो हाइट है दैट इज 125 सेंटीमीटर एंड दैट इज रो ए की 1.2, दिस इज आवर ओके। यहाँ से हमारा टोटल प्रेशर मिल जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 पॉइंट, सब कुछ किलो पास्कल निकलेंगे तो हमारी डेंसिटी 101.3 किलो पास्कल प्लस प्लस 13.6, जस्ट हम थोड़े से ट्राई करेंगे क्योंकि हम सब कुछ किलो पास्कल निकलेंगे दैट विल बी 13.6 into 9.81 into 0.5 plus 0.8 to 9.81 1. Let me solve. One 177.81 ओके। अगर यहाँ पे मैंने 1000 मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1000 मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये हमने लिख दिया है किलो पास्कल, ये किलो पास्कल में, तो ये जो टोटल प्रेशर आएगा ये भी आएगा किलो पास्कल में और ये भी आएगा किलो पास्कल। अब चाहे तो 1000 से मल्टीप्लाई करके फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो फाइनली वापस किलो पास्कल में ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई। दिस इज आवर that is 177.818 kilo Pascal. Next one.
mercury water manometer has phase difference 500 mm. The difference in elevation of menisci. What will be the difference in the pressure? It's a simple question. X given है प्रेशर हेड डिफरेंस जो गिवन फाइंड करते हैं जो x जो डिफरेंस फाइंड करते हैं दैट इज 500 mm या फिर 0.5 500 mm फिर 0.5 व्हाट इज h प्रेशर हेड जो होता है x s सिंपल फॉर्मूला x s दैट इज 0.5 mercury water 13.6 by 1.8 answer is 6.1 minus 1 that is h is 6.6.3 h is 6 तो यहाँ से पूछा गया था आपका दैट इज x इक्वल्स टू 3. Okay, so this is your question. I hope you got the okay. Next one. Stream function for the flow field is psi equals to 3xy square 3x square y plus 2 plus ty. The velocity at point P for the position vector r equals to I plus 2. This is I plus 2. This is I plus 2. R equals to I plus 2j that is and time t equals to 2. Stream function given है आपको velocity चाहिए. You need to find velocity. You need to find. You simply need to find velocity. What is velocity? Psi is given as 3x square y plus 2 plus t y 2 plus ty. Position vector given है r equals to I plus 2 I equals to sorry r equals to I plus 2 that will be and t equals to इस पे आपको वेलोसिटी व्हाट इज u तो हमें वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है. व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर इज ui plus p. व्हाट इज u minus del psi by del y and what is v that is del psi by del y that is 3x square that is 0 3x square and what is this del psi by del x del psi by del x that is 6x okay at r equals to I plus 2j that is x equals to 1 y equals to 2 at इसको रख लेंगे आप तो आपको जो u मिल जाएगा that will be minus 3 u will be minus 3 and v equals to
equals to del square by del y. Okay, plus this is also here, no? 2y t plus 2y t plus what is y? Y is 2, that is 4, t is 2, 4 plus that is 16 minus that is u equals to minus 19. And what is v? 6xy, x is 1, y is 2, that is 12. तो जो v आ जाएगा, जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, ओके, कहीं कहीं पे आपको ये डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने जो माइनस डी सी बाई लिया है और v को डेल सी बाई डेल एक्स प्लस लिया, राइट? किसी किसी बुक में आपको u प्लस मिलेगा और v आपको माइनस मिलेगा, दैट इज द सेम थिंग, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी minus 19i plus 12. This will be the 2i plus b. यहाँ पे ऑप्शन जो ऑप्शन विल बी ए. ui सिंपली हमें u और v फाइंड करना है. डायरेक्टली एक्स मैंने देखिए हमें उसका पोजीशन वेक्टर गिवन था, उस पोजीशन वेक्टर से हमने इसको सॉल्व कर लिया. I hope you got that. This is our velocity. Option E. Two-dimensional flow field is given as defined as ix minus j ix minus j. ये आपको given है. The equation of streamline passing through the point 1 2 is. Okay, I'll give you 1 minute to solve this question. What is the equation of streamline? Equation of streamline is dx by u plus dy by dx by u equals dy by 2. dx equals to, और जो velocity vector given है, velocity vector is given as xi minus y, xi minus y, xi minus y, xi minus y dx by x, that is u equals to x and b equals to minus, that is dy by, दोनों को अगर हमने इंटीग्रेट कर लिया हमने, that will be ln x, that is equals to ln minus ln y plus and x y equals to at 1 2 c equals to at 1 2 पॉइंट 1 2 पे कितना हो जाएगा ये 2.12 at 1 2 equals to 2, that is x y equals to 2, is x y minus 2 equals to this equation of it.
xy minus. This is the equation of xy minus 2 equals to. This is the answer, xy minus 2 equals to. This is xy minus 2 equals to. This is xy minus. ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन थी, ये आपको याद होनी चाहिए, सिंपली यहाँ से सॉल्व. ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी. इसको कैसे आप लिखते हैं, स्ट्रीम लाइन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और ये सारी चीजें आप कैसे सॉल्व. नेक्स्ट वन, फॉर स्टीडी टू डायमेंशनल फ्लो, इसके ऑप्शंस नहीं है, राइट. अब सीधा आंसर फाइंड करेंगे. फॉर स्टीडी टू डायमेंशनल फ्लो, the scalar components of velocity fields are Vx equals to minus 2x, Vy equals to 2y, Vz equals to 0. The corresponding components of acceleration, right? X और y टर्म में आपको acceleration यहाँ पे find. तो इससे हमें लिखता हूँ 0, 4, 3, 4 by 0, C is 4x, 4y, and D is left options, something like that. इसी तरह के कुछ options पे क्वेश्चन जो आपको नहीं है, something like simply find the answer for. Just try. What is acceleration in x direction? That is u del u by del y plus v del u by u del u by del x. V del u by del y plus w del u by del j plus del u by. ओके, सिर्फ यहाँ पे टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, टाइम का जो वेलोसिटीज है वो टाइम का फंक्शन नहीं है. यहाँ से ए एक्स हो जाएगा. u is given as minus 2x minus 2x and del u by del x. Del u by del x is 2 plus v. V is given as 2y, y component 2y, and del u by del y is 0. This is 0 plus this is. So this is ax हो जाएगा, that is minus. This is, no, this is also minus. This is 4x. Ax is 4x. So what is ay? That is v del v by, sorry, u del v by del x plus v del v by del y plus w del v by
del j plus del v by. Now what is u? That is minus 2x del v by del x. Del v by del. This is v, 2y. X के respect में for differentiation that will be 0 plus p. V is 2y. Del v by del y is 2 plus 0 that is 4. जो आंसर है, आंसर इज 4x है. आंसर इज 4x है. तो Vx का मतलब है दिस Vx इज u and that is equals to minus 2x. Py is y component of velocity is simply जो v हम यूज करते हैं and that is given as 2y. Vz that is w that is given to you. टाइम का कोई फंक्शन टाइम पे भी नहीं है तो आपका टाइम के रिस्पेक्ट में 0 होगा. This is तो एक्सेलरेशन इज दिस. यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा this is the next one. Take whether the following flow field is physically possible or ये फ्लो पॉसिबल है या नहीं है, स्टिकी है या इनकम्प्रेसिबल है, ये सब आपको बताना है. इस फ्लो फील्ड का जो इक्वेशंस है उस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशंस को देख के आपको ये सारी चीज. कैसे फाइंड करेंगे हम? u गिवन है, व्हाट इज u? हियर इज 3xy square plus 2x plus y square. v गिवन है, दैट इज x square minus 2y minus x. पहली चीज तो ये है कि नो फंक्शन ऑफ टाइम, नो फंक्शन ऑफ टाइम. तो अगर ये फ्लो हुआ दैट मीन्स स्टीडी फ्लो, दैट मीन्स स्टीडी फ्लो हुआ, कोई टाइम का फंक्शन नहीं. नेक्स्ट लेट अस चेक कंटिन्यूटी इक्वेशन. हम कंटिन्यूटी इक्वेशन चेक करते हैं. लेट अस चेक द कंटिन्यूटी इक्वेशन. व्हाट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन? del u by del x plus del v by del y and that should be, that is, let us see what is this del u by del x. इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज 3y square 3y square plus 3y square plus and that is 2. And what is del v by del x plus del v by del y, right? That is minus 2 minus 3. Okay? And that means this is 0. That means कि जो आपकी कंटिन्यूटी है सेटिस्फाई हो रही है. यहाँ पे जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये वाली कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. दैट मीन्स द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल. कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो दैट मीन्स फ्लो पॉसिबल. और ये वाली कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने जनरली पढ़ी थी, इससे हमने सब कुछ पढ़ा था, राइट, यू के टर्म में और डेंसिटी के टर्म में, टाइम के टर्म में. लेकिन ये कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि फ्लो पॉसिबल भी है और इनकम्प्रेसिबल. अलग अलग कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने देखी थी, स्टेडी फ्लो के लिए भी अनस्टेडी फ्लो के लिए भी अलग अलग कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने हर जगह देखा. ओके
तो इस इक्वेशन के सेटिस्फाई होने का सिंपल सा मतलब ये है कि द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, और कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स फ्लो इज पॉसिबल। टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स फ्लो इज स्टेडी। तो सब कुछ मिला के द फ्लो इज पॉसिबल, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। Flow is possible, steady and incompressible. Can simply conclude that this flow is possible, steady and incompressible. Okay. Next problem. Next problem. Let us see what is the steady incompressible flow field is given by u equals to 2x square plus y square and v equals to minus 4xy. Convective acceleration we have to find convective acceleration along x direction at point 1. Convective acceleration along point 1 in x direction at point. What is convective acceleration? X direction. Let us find out. Let us find out. What is acceleration? X u del u by del x plus v del v by del y plus w del del u by del y del u by del z plus del u by. इसमें से जो convective part, this is the convective part. This part is convective. और इसमें भी z का कोई टर्म नहीं है, तो जो कन्वेक्टिव टर्म बचा दैट इज u del u by del x plus v del u और u del u by del. Okay, what is u? U is given as 2x square plus y square, or u is given as 2x square plus y square, and v is given as minus 4xy minus 4xy. v is given as minus 4xy. Okay, तो पॉइंट 1 2 पे देखते हैं. At point 1 2, at 1 is 1 4 is 6, and b is 2 minus b is minus 8. Okay, now what is del u by del x? Del u by del x is 4x, and del v by del y is minus, that is 4, and that is 4. 4 and minus 4, like minus 4xy minus 4xy 2x square plus y is del u by del x del u by del y, del u by del x and del u by del y, 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 that is 2, and 2y is again 2y is 5, this is 4, दोनों आपका 4 है, तो a x यहाँ से मिल जाएगा, a x will be u 6 del u by del x 4, okay, plus b minus 8 del u by del y, that is 4. This is 24 minus 32, that is minus 8 meter per second, minus 8 meter per second. Answer is minus 8 meter per second. Minus 8 meter per second. This minus
और रोटेट एक्सेलरेशन इसमें जो W का टर्म है W इज 0, दिस W इज 0, तो W का टर्म W इज 0 क्योंकि आपका यहाँ पे Z का कोई फंक्शन नहीं था, तो W आपका ऑलरेडी टर्म for W will be 0 already. So the answer is -8. The answer is -8. The answer is minus. Next one. Solve this. If a streamline and streamline in a streamline steady flow, 2 points A and P on a streamline are 1 meter apart. The flow velocity varies uniformly from 2 meter per second to 5 meter per second. 2 meter per second से लेके 5 meter per second तक वो वैरी करती है. What is the acceleration of net? Let us see what is that. Suppose कि ये कोई स्ट्रीमलाइन है आपके पास, दिस इज A एंड दिस इज, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर. और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट VA इज 2 meter per second. This is 2 meter per second. And here VB is 5 meter. आपसे पूछा गया है कि what is the acceleration? What is the acceleration at a fluid at B? What is the acceleration at B? And that will be VB equals to सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं VB सिंपल जो आप ऐसे लिखते हैं ना, U del U by del X ऐसे लिखते हैं. दैट इज VB, तो वेलोसिटी जो चेंज वेलोसिटी है दैट इज 5 minus 2 by 1, right? That is 3, that is 15 meter. जो एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं V और dV by V dV by ds. अगर वन डायमेंशनल है V dV by V dV by ऐसे भी एक्सेलेरेशन लिखते हैं V dV by ds. वही हमने यहाँ पे यूज किया वन डायमेंशन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. एक्सेलेरेशन इज dV by dt या फिर V dV by ds. दोनों में से कोई भी तरीका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम. Next problem. Let us solve this problem. This I and this is I and this is I cap x square minus I square plus. Let us see what is given. This
u is given as x square minus y square plus x. And what is given? V is given here minus 2xy plus y plus y. राइट, अगर इसको हमने कंपेयर किया v इक्वल्स टू यू आई प्लस बी जे, यू आई प्लस बी जे से ये हमारा u मिल गया. हमें चाहिए क्या यहाँ पे? कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन एट एक्स वाई 1 2. तो ये मिल जाएगा एट 1 2 एट 1 1 2 पे रख देंगे आप. दिस इज 1 minus 4 plus 1, that is minus 8. 1 minus 4 plus 1, this is minus 2. And what is v? Minus 2x, this is 2 minus 4 plus 2, that is u और v दोनों हो गया आपका minus 2. What is del u by del x? Del u by del x, this is 2x plus 1, and that is 1 2 by 2 plus 1, that is 3. Del u by del y, what is del u by del y? Minus 2y minus 4. Del u by del z करेंगे, del u by del z करते हैं. What is del v by del x? Del u by del x minus 2y, and that is minus 4. Del v by del, what is del v by del y? Minus 2x plus 1. Minus 2 plus 1, that is minus 2. Okay, this is something like. What is ax? U del u by del x plus v del v by, what is u? Minus 2 del u by del x 3 plus v is minus 2 del v by, del u by del y minus, that is 8 6, that is 2. Ax is 2 minus 6 plus 8, that is 2. Ax is 2 from here. From here we can find ax is. What is del ay? What is ay? What is ay? U del v by del y del x plus v del v by, what is u? U is minus 2. Del v by del x is minus 4 plus v is minus 2, and del v by del y is minus. This is 8, this is 2, that is 6, and minus 6. This is plus, this is plus, both are plus. 8 and 2, that is 10. Both are plus, that is ay is, what is a? The magnitude C, that is a equals to 7 x square plus 5 square is under root 104, and that is 10.1. The answer will be 10.19. Okay, so this is answer. Answer is 10.19. Answer is 10.19. So I hope you got the. ऐसे आप करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो आपको गलत होने के चांसेस नहीं है. आप इसको सॉल्व कर लेंगे. ऑफ कोर्स दिस वाज द ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम. sorry, none of them. Answer is none of them. Answer is none of them. तो आंसर इस नहीं है. आंसर इज 10 पॉइंट. तो आंसर है, आंसर इज एक्सेलरेशन इक्वल टू 10.19. और वो ऑप्शन आपको गिवन नहीं यहाँ पे, दैट मीन्स नन ऑफ देम. करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ देम. Okay, so I hope you
enjoyed all these things, and we can simply ओके। तो आज हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी जो हमें अभी सॉल्व करने हैं, दैट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो। ऑल दिस थिंग्स वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। Okay. So I hope you enjoyed this lecture. Uh, Thanks for joining, and please subscribe to this channel and also get your subscription at Unacademy. प्लस या आइकॉनिक जो भी आपको सूटेबल लगता है आप वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, राइट। यूज दिस रेफरल कोड VPY to get 10% discount in your total annual total subscription fees. Whatever course you are buying, you can use this code and you will be getting 10% discount. Iconic या फिर plus. Iconic आपके लिए बेस्ट इसलिए है because here you will get personal coach. Here you will get personal coach, okay, and personal guidance, and that will help you improve in your rank as well. Okay. So, all right. I hope you